Hello student, myself Hanuman Verma and I am here to take a class on the topic set relation function. तो चलिए शुरू करते हैं set relation and function. Before going to our topic, we go in our childhood days. In our childhood days, we collect, we have a property like collection of something. Okay, हम बचपन में क्या करते थे, बहुत सारी चीजों को हम कलेक्ट करना करते थे, लाइक our toys, our books, our clothes and other things जो हम उससे खेलते थे अपने खिलौने। तो वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी संग्रह करने की किसी चीज की, बेसिकली उसी आइडिया से हमारा मैथमेटिक्स में एक सेट डिफाइन होता है। ओके, समथिंग इज अ कलेक्ट, वी कलेक्ट समथिंग, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे कलेक्शन जो होता है उसमें डिफाइन नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे, जब हम एक निश्चित तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में सेट को। ओके, बट बचपन में कोई रूल तो होता नहीं है कि कैसे डिफाइन करना है, कुछ भी हम इकट्ठा कर ले रहे हैं किसी भी चीज को, तो वहां पे कोई रूल नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, हमारा एक रूल होता है जिसके थ्रू हम वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन बनाते हैं जिसको हम सेट का नाम देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेट। ओके, फर्स्ट वन, set. Set is nothing but it is a collection of well-defined, distinct object is called set. That means here collection means that this we collect something, and here distinct object means that अलग-अलग वस्तुएं, अलग-अलग चीजें। Okay, and basic very important thing that is well defined. That is there is a no confusion to include or exclude the object in the collection. वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट को लेके कि उसको शामिल करें या ना शामिल करें। दैट इज योर द डेफिनेशन ऑफ द सेट। ओके, जनरली क्या होता है, सेट आर जनरली एक्सप्रेस्ड बाय अ कैपिटल लेटर और इंग्लिश अल्फाबेट। एवरीवन इज नो, एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट। द कैपिटल लेटर ए बी सी से जो है हमारा वो सेट एक्सप्रेस किया जाता है जनरली। बट अगर बात करी जाए एलिमेंट्स की तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, द एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्मॉल लेटर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी एंड एक्स कॉमा वाई। तो जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। इफ वी discuss the belong to any element, a is an element, we say a is an element of the set a, then we say that a is belonging to the a. That means the element a is in the set a. Okay, and if we say that v is not an element of v, that means v is not belong to the set v, then we write it as v does not belong to the set v. तो सीधा सीधा है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है उसको हम किसी सेट में बिलोंग्स टू कहेंगे, तब कहेंगे जब वो सेट जो है उस वो एलिमेंट जो है ए विच इज इन प्रेजेंट इन सेट ए, बट इफ बी और हम बी को बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे जब वो सेट में ना हो। ओके, अगर बात करें एग्जांपल्स की तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लाइक एनी सेट ए which is 1 2 3 and 4. If we see that the element, if we take a is equal to 2, then here we see that 2 is belonging to the set A, then we write it as 2 is belonging to the set A, that is 2 is element of A. And but here if we take element 5, that is equal to B, but 5 is not in the present in the set A, so we write it as 5 does not belong to the set A. Okay, that is a, I think it is clear by example. Example is very important. Okay, now here second one is our representation of a set. Representation means that how the set are represented. Okay, how we write the set, form of the set. Okay, first representation क्या होता है हमारा, रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल और सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इन बेसिकली रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट को लिस्टिंग करते हैं, वी लिस्ट द एलिमेंट्स in roster form. Like if we take one example, if we take set of natural numbers, set of
नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, एन। इसको राइट कैसे करेंगे? इसको अगर हमको रजिस्टर फॉर्म में लिखना है तो 1, 2, 3 इस तरीके से हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे। दैट इज लिस्टिंग तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी लिस्टिंग द एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2, 3 and so on. Okay, now same example we take in set builder, but before going to the example by example, the definition should be clear. Okay, now set builder form, what is set builder form? In this form, we use a letter X to represent an arbitrary element, right? Specific properties. We can say that here by a rule. Okay, a rule is defined. Specific property means that a rule. Say P of X satisfied by the element of the set and set is represented by इस तरीके से हम represent करते हैं. But basically इसका motive क्या है कि set builder form का कि हम किसी भी if we write the set builder form, then we write the elements and such that by which rule is defined by the elements are in the set by which rule is defined in the set. Okay, now for taking by example, if we have set of natural number like set of natural number in the above just the same, okay, n, if we write if we want to write set of natural number in the set builder form, then how we write n is equal to curly bracket x is a artery element of this set such that बाई रूल हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसा रूल है? x क्या है हमारा? x इज ए नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर। एंड one other example we take example, if we want set of vowels, ओके, अगली स्लाइड में इसको देखते हैं अच्छे से। नाउ एग्जांपल सेकंड, if we take set of English alphabet vowels, okay, vowels का कलेक्शन हम गिवन है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म शेड्यूलर फॉर्म दोनों में करना है। तो इन रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे? We all know about the roster form, listing the elements. Then how we list? And everyone should know about vowel, that is A, E, I, O, U. Then we list in curly bracket A, E, I, O, U. That is your roster form. And in set builder form, then any arbitrary element, we take any arbitrary element such that a rule is defined. Rule, what is a rule in this collection? That is a your x arbitrary element is a vowel. Okay, vowel कह दिया तो उसके सारे एलिमेंट्स उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बट फॉर देखिए, अगर बात करी जाए शेड्यूल्डर फॉर्म की और रोस्टर फॉर्म की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रोस्टर फॉर्म होता है आपका, वो जनरली ब्रॉडर स्ट्रक्चर में नहीं यूज हो सकता है। क्योंकि अगर आप बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स को देखने की या सेट ऑफ बहुत बड़े बड़े कार्डिनलिटी वाले जो सेट होते हैं उनको देखने की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में डिफिनिट फाइनाइट जो सेट होते हैं उनको बहुत अच्छे से वो लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट तो आप लिस्ट कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म बेस्ट तरीका होता है किसी भी इनफाइनाइट एलिमेंट वाले सेट को आराम से वो उसको वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और हम इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रूल होता है और उस रूल को समझना होता है कि इस रूल के थ्रू यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ set, that is your roster form and your set builder form. Now after that we will discuss some notation of the number. First one, that is set up, everyone should know about set of natural number, how we represent, that is 1 comma 2 comma 3, that is set of natural number denoted by n, set of whole number, that is 0 comma 1 comma 2 comma 3 that is your set of whole number, and this in the same way set of integer and rational number denoted by q, and your irrational denoted by, that is pi to e, that is your t or q complement. Okay, and set of real number, all we are familiar with capital R. Okay, and set of complex number we know, all know complex number c होता है, but c को ऐसे भी लिखा जाता है, c is equivalently say that r cross r, this is nothing but this is r cross r. Okay, that is set of real number, that is also it is set of this is denoted by set of real numbers. Okay, so that's all about notation of.
चलिए अगर अब नाउ वी डिफाइन एक हमारे पास चार्ट है, दिस इज चार्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम, हाउ वी रिप्रेजेंट द ऑल द नंबर सेट ऑफ नंबर्स आर इन रियल नंबर्स। ओके, तो अगर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर contained in set of whole number and set of natural number and whole number contained in set of integers and all three contained in set of natural numbers and all are contained in the set of real number. Okay, and here irrational numbers are what, that is root 2, root 3, pi, that is root 11, so on. That's all about numbers. Okay, now a big talk about the void set or null set. Everyone knows know about void, empty set, null set. That means that means set has no element in it. Okay, it is called a void set or empty set. We can say that any set A is called, that is it contains no element in it. That is called your empty set. इट लो, इसको हम एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि the set x any element set of which integer such that x lies between 2 and 3. If we represent this on a number real line, that is 2 comma 3, but everyone is know about between 2 and 3 there is no integer present in it, so this set contains no element of set of no elements of integer, there is no element in integer. Okay, so that is your empty set. That is, if we say that s is empty set, no element in it, that is called empty set or null set or void set. Now after that we will define with finite and infinite set. A set which is either empty or has finite number of different element is called a finite set. That means finite means that finite we can count. Okay, like if we have a set A is 1 2 3 4 like as, and set B is say A E I O U. Everyone should know about this is it has four elements, that is we are count, and this has set V has five elements that are vowels that are count. Okay, that is your finite set. If we talk about the infinite set and the set which is not finite, which is called infinite. If we taking by example, that is set of natural number, set of real number, set of complex number, set of rational number, these are all are infinite. Okay, we cannot finitely count it, finite count. Okay, now if we if any set singleton set, the concept of single set, that is any set A contain one element, only one element, that is called your singleton set. Okay, now equal set and equivalent set. Basic difference between equal and equivalent set. Equal set A and B said to be equal when कब ए और बी को कब इक्वल कहेंगे, ए और बी को तब इक्वल करेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वही बी में हो जाएं, और जो बी में हो सारे एलिमेंट ए में हो जाए, दैट इज द बेस ऑफ द इक्वालिटी, दैट इज इक्वल सेट, said to be the equal set. Okay, or we can in mathematically we can say the a equal to b if and only if, that means both ways correct. X any element x is arbitrary element in a is belonging to the x in B, and also vice versa. X belonging to B, this implies X is in A. Okay, and also two set A and B are said to be equal set if every element of A is in B and every element of B is in B. वही बात है कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट जो होते हैं A में होने चाहिए, then we can say that A equal to B, that is equal set. अगर बात करी जाए इक्विवेलेंट सेट, दैट इज इक्विवेलेंट मींस दैट A is equivalent to B if has equal number of elements, that is cardinality, equal, same in cardinality, that is A and B is said to be equivalent if cardinality of A and cardinality of B is same.
बट यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए. ओके, दैट्स, आई होप it is clear. Now after that we will discuss about subset. What is subset? If every element of set A is in B, then A is called a subset of B, which is expressed as A subset of B. That means subset क्या होता है हमारा? A is said to be subset of B when all the elements of A present in the set B, and here it is called A is subset, okay, and B is called superset. Okay, and A is subset of B, and if A is not equal to B, then A is called proper subset. Proper means उसमें कंटेन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, उसमें कंटेन हो जाने चाहिए, यानी कि वो एलिमेंट जो A है उसको B का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? when A is contained in B but A is not equal to B. अगर यही भी बात करी जाए इम्प्रॉपर सबसेट की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि A कंटेन तो करेगा, A तो कंटेन करेगा B में, बट ये इक्वल भी हो सकता है, दैट इज योर इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, दैट इज कैन बी. अगर बात करी जाए एग्जाम्पल का, तो आप अगर सी देखेंगे 2 3 4, तो 2 3 4 बी में प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट द सी इज सबसेट ऑफ बी. ओके, इन द सेम वे वी कैन वेरीफाई इजली अदर थिंग. Now property, some property of subset. What is some property? That is, we know that every subset is contained in itself. ये तो ट्रिवियली ट्रू है. एंड phi always a subset of A, ये भी ट्रिवियल है. A is equal to B, that means what? A is subset of B and B is subset of A. That is same है कि all the elements of A in B and all the elements of B in A. Okay, A is subset of B and B is subset of C. That's it can be written as A is subset of C. इस ये हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. X is any element of A that are, चूंकि X अगर कोई भी एलिमेंट A में लेंगे तो वो हमारे B में हो जाएगा क्योंकि वो सबसेट है. एंड सिमिलरली अगर V में है, V जो है C में कंटेंट है, तो जो X यहाँ पे मिला है हमको यहाँ पे C में भी चला जाएगा, तो वो X जो है वो C में भी चला जाएगा, वो एलिमेंट और पेरी है, इसलिए वो A कंटेंट इन C. ये हमारा प्रूफ भी हो गया. ओके, इंटरवल की बात करी जाए तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? ऐसे 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 एलिमेंट का कलेक्शन जो ए और बी के बीच में सारे हैं और ए बी को भी हम इसमें शामिल करते हैं. ओपन इंटरवल इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? दैट इज ए कॉमा ए बी. क्लोज इंटरवल. सेमी क्लोज, सेमी ओपन, दैट मीन्स सेमी क्लोज, सेमी ओपन, दैट्स. बट बात की जाए ओपन इंटरवल क्या होता है हमारा? ओपन इंटरवल हमारा होता है कि ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी बट नॉट ए बी पे हमारा जो है वो क्लोज नहीं होता है. नाउ इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर बात की जाए रियल लाइन की हमारी, तो वो यहाँ पे अब मानते हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी है हमारा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ पावर सेट की बात कर लेते हैं. तो व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑल द सबसेट्स. ओके, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे? पी ऑफ ए से. ओके, अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करी जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, दैट इज 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है? वो हमारी कार्डिनलिटी होती है ए की, सेट ए की. ओके, दैट्स ऑल अबाउट पावर सेट. एंड नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पावर सेट क्या होता है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं. ओके, नाउ वी हैव a set A which contain the three elements 1 2 3, then we want to write its power set. Then power set A can be written phi is trivial subset of A, and this is 1 singleton 1 singleton 2 and singleton 3, and this is 1 2 2 3, and this is 1 comma 3, and this is 1 comma 3.